Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. Today we are back with a very interesting topic, but before I begin, let me inform you that from today onwards we are using 3 series model. On Sunday we will be talking about investments, and weekend, Saturday or Friday night or Saturday we will be giving weekly economic data, and during the weekdays we will be taking concept based lectures which may be based on CBSC or general economic topics. This is going to be the schedule of eco tutorials from now on. Now coming back to my presentation for today, that's very important, that is gold versus stocks versus real estate. Which investment will win by 2035? Usually what happens when you invest, you're confused. You want to invest in a safe haven, you want to invest where returns are high, and you want to gain, and for that we have 3 options before us: gold, stocks and real estate. Today we are going to discuss that if we invest today, by 2035 who will win. तो बड़ा सिंपल है कि आज अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके सामने है, या तो आप सेफ हेवन देख लो या रिस्क ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट देख लो। वेल्थ क्रिएशन करनी है, हमने स्टेबल वेल्थ क्रिएट करनी है, तो हमारे सामने 3 ऑप्शंस हैं: गोल्ड देखें, स्टॉक देखें और रियल एस्टेट देखें। माय क्वेश्चन इज, इफ आई इन्वेस्ट टुडे, हु इज गोइंग टू विन बाय 2035? If I invest today certain amount, who will win in 2035? For that we have taken a story, but before I begin, disclaimer that this video is only for educational purpose. You know, investment involves risk, so better to consult your financial advisor before taking any decisions. It is for only educational purpose. It is not a information advice. The information, data, charts and opinions presented are based on sources believed to be reliable. We say we don't really rely on this data, counter check this data also, although we have taken care that reliable data is given, but still we advise you to check the data, verify the data before believing in anything. Then past performance not indicative of future. Any performance, if the stock is have performed better in past, it is not certain that they will provide good returns in future also. So you have to take a very wise decision. You know, the investment involves risk, and before taking any decision, just consult your financial advisor. He is the best advisor for you, and we own no liability for any of the advice we are giving. It is just for information purpose. So this is the basic disclaimer. Again, verify before you act. That you must verify the data before you act. So coming to our presentation part, again a story of 3 persons, A, B, C. 3 आदमियों की स्टोरी लेके चलते हैं। पहला फ्रेंड है, 3 फ्रेंड्स हैं ये, दे आर 3 friends. They made 3 different choices. In 2025 each have 10 lakh rupees. 10 lakh rupees के साथ ये चलते हैं और 3 different choices करते हैं। Friend 1, he invest in gold. क्यों इन्वेस्ट करता है गोल्ड में? Because he believe that safe, reliable and timeless. ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, रिलायबल है। गोल्ड का प्राइस आप जानते हो, कंपेयर टू अदर एसेट्स ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। दिस इज व्हाट दिस फ्रेंड 1 थिंक्स। सेकेंड, this man is a risk taker. He invested in stocks. आपको पता है, investment in stocks involves market risks. So he is willing to take this risk. Why? Because he believed in compounding, growth, compounding wealth. That stocks, mutual funds, which I invest today, over the time the compounding result will give me good results. And the third one invested in real estate because he was looking for security, long term, कि मेरी पीसफुल लाइफ हो, एक घर हो, मेरा अच्छा सा घर हो, तो मैं वो चाहता हूँ। तो एक बार फिर देख लो, 3 दोस्त हैं, एक गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है
और एक रियल स्टेट में इन्वेस्ट करता है। और देखना ये है कि इन तीनों में जो कि 2026 में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईच ऑफ देम इज इन्वेस्टिंग रुपीज 10 lakhs, who will gain? That's the question. So we proceed further. Why this topic? सबसे पहले कि हमने ये टॉपिक चुना क्यों? Why this topic? 5 big reasons this topic is important for all of you. This topic is important because of 5 reasons. Number 1, inflation is rising. Prices of everyday of things are going up. Your money needs to grow faster. You want to beat inflation. इसलिए wise investment decision is required. Then global uncertainty. You know, geopolitical tensions, trade wars and global shadows create market volatility. So this topic is important because you want to hedge against these geopolitical uncertainties. Then wealth creation. You know that a wise decision will create wealth. So right investment decision today can build long-term wealth. If I invest wisely today, that will give me long-term wealth. That's my idea. Then your financial future, smart choices today lead to financial freedom. In future you will enjoy financial freedom. Understanding gold stocks and real estate. I have 3 options, either to invest in gold or to invest in stock or to invest in real estate. So this topic is important. That will give me options. That will give me clear insights where to invest. Now, just last line, the world is changing fast. Prices are rising. Markets are uncertain. Choosing the right investment today can secure your tomorrow. In these period of global uncertainties, we require a good, smart investment decision. That's what we are going to analyze. Which is the smart decision? Again, disclaimer is there that this is not a financial advice. You must consult your financial advisor before taking any decision. Then, informed decision today will make your life better tomorrow. Investing is not about timing the market. It is about time in the market and right strategy. So if you want to invest, you have to adopt right strategies. So first of all, this 5 big reasons why this topic is important. Then next, the rules of investing. Again, 5 rules which every smart investor must know. कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ये 5 रूल्स का पता होना चाहिए अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है. सबसे पहले फर्स्ट इज रिटर्न. I must know the reward you can earn by taking risk. कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, क्या रिटर्न मेरे को मिलेगी by taking risk. Focus on long-term returns, not short-term. The first rule of investing is we have to focus on long-term returns. Short-term terms may give you a short-term gain, but long-term losses, probabilities are more. So first rule is invest, focus on long-term returns. Second is risk. Uncertainty is part of every investment. Whenever you invest, whether you invest in gold, whether you invest in real estate or you invest in stocks, risk is there. You must know how to manage this risk. Understand, measure and manage risk wisely. You must manage the risk wisely. This is the second rule of investing. And the third one is liquid. Which form of investment is more liquid? देखो, ऐसा है कि लिक्विडिटी एकदम कैश में कन्वर्ट करना हर एक एसेट्स को पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू कैन फेस. लेकिन इन्वेस्टमेंट रूल ये कहता है चूज एसेट्स दैट गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि एसेट्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू लिक्विडिटी. सो थर्ड रूल इज look for the liquid assets. Then taxation. You have to choose a tax efficient investment wisely. Don't choose investment where heavy taxation is involved. वो taxation चुनो जहां आप अपना tax efficient हो. अपना investment decision keeping in view taxes को ध्यान में रख के करो. And last of all, the most important, you must protect where inflation is hedged, that your investment grows more than inflation. Prices are bound to rise.
year after year. So what is required is that you must invest where this hedge against investment is there. So 5 rules: you must check at return, you must manage risk, you must invest in liquid flexibility where liquidity is there, taxation saving यानी कि tax avoidance. We are not talking about tax avoidance, we are talking about less taxation, efficient taxation measures, and last of all, hedge against protection. These are the 5 rules, and the idea is no single asset is best on every dimension. कि भाई अभी आपको आगे चलेंगे कि आपको कि ये सिंगल एसेट बेस्ट है, ऐसा नहीं है. हर एक एसेट के अपने प्लस हैं, अपने माइनस हैं. So no single asset is best for every investment. Key takeaway: the key is balance and diversification. This we will be talking. कहता है invest with a plan, stay disciplined. This is the core of this presentation. We will come to this later on. Next is this. सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं. गोल्ड चॉइस, एक फ्रेंड की चॉइस आपको पता है गोल्ड है. हम देखते हैं कि गोल्ड क्या कहता है. गोल्ड, he says, is the timeless store of value. It is a timeless store of value. कहता है gold has preserved wealth for thousands of years and continues to be trusted as safe haven. देखो, सबसे ज्यादा सेफ हेवन कोई मानता है तो वो गोल्ड को माना जाता है. ठीक है. It is a timeless store of value. कि you want to, और in India by culture, you store gold. आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो. वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग में वो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी. नाउ देखो, इसमें हमने क्या कहा है कि गोल्ड को देखें कि पिछले 10 साल में ये कहां मूव किया है. डाटा हमने लिया है मई 2017, जब 29,000 पर 10 ग्राम गोल्ड था. आज ये मई 21, 1,56,000 जो लेटेस्ट प्राइस है, ये जून में, जुलाई में आपको पता है 1,40, 1,41 पे आ गया. लेकिन लास्ट 25 और 26 में देखो, इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिले हैं आपको, और कई केसेस में 70%, 80% तक रिटर्न गोल्ड ने दे दिए एक साल में, विच इज नॉट ट्रू इन द सेंस कि भी यू कांट बैंक ऑन दिस दैट ईयर आफ्टर ईयर दिस विल गिव दिस रिटर्न. ठीक है. अगेन मैंने कहा कि हर एसेट एक फेस से निकलता है. बूम के फेस में गोल्ड रिटर्न दे रहा है, हो सकता है कल डाउन आ जाए तो गोल्ड क्रैश भी कर जाए. सो ये देखो, इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 14.3% हमने ली है ओवर द इयर्स, इतनी आई है. अब वो कहता है कि why you want to invest in gold? Because it is a safe haven, performs well during economic uncertainties. मैंने आपको बताया ही है कि if there is emergency, gold is the best hedge. Then inflation hedge. देखो, right now you can say this is an inflation hedge, that its rates protect you against inflation. लेकिन this is not for sure. हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस इतना ना बढ़े कि वो इन्फ्लेशन को hedge कर पाए. ठीक है. लेकिन यूजुअली दिस हैपेंस दैट इट इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. देन ग्लोबल एक्सेप्टेंस, एक ऐसा इट इज एन एसेट विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड. ये नहीं है कि एक कंट्री में एक्सेप्ट किया और दूसरे में नहीं. दिस इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड एसेट. एंड डिमांड ड्राइवर्स, स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉर ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट, एंड मोर ओवर दीज डेज सेंट्रल बैंक्स आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड. सो वी हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड. सो गोल्ड के लिए हम कहते हैं इट्स ए सेफ हेवन, इट इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ग्लोबल एक्सेप्टेंस एंड डिमांड ड्राइवर्स. अब नो क्वेश्चन इज हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, कि कैसे करें. तो वो कहता है सबसे पहले तो यू परचेज फिजिकल गोल्ड को परचेज करूं. और इंडियंस की मेंटालिटी लूं तो वो पेपर गोल्ड की तरफ नहीं जाना चाहेंगे. दे वांट टू परचेज दिस फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, कॉइन्स एंड बार्स. देन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बैक्ड, अर्न्ड इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स, टैक्स बेनिफिट एटसेट्रा. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो. देन गोल्ड ETFs खरीदो, इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड. देन डिजिटल गोल्ड है, गोल्ड ETF है. लेकिन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग यू मस्ट कंसिडर दीज risks. If you are thinking of regular income, there is no regular income like dividend or rent. इस पे नहीं है, कोई regular income नहीं है.
आज लिया, जब बेचेंगे तब देखेंगे कि क्या प्रॉफिट है. देन price can be volatile in short term. Right now, you know, the time we are passing, the gold prices are highly volatile. Volatile है, prices can be volatile in short term. Physical gold has storage, safety and making charges. Storage आप बैंक के लॉकर्स में जमा कराते हो तो वहां आपसे चार्जेस भी लिए जाते हैं, although they are very nominal. Returns may be lower compared to equities in the long run. ये भी है कि इसकी रिटर्न्स इक्विटी से शायद कम हो. So the message is gold is not just a metal, it is a financial security you can hold. कि गोल्ड के फेवर में जाता है कि इट्स आपके मेंटल पीस को बढ़ाता है और एट टाइम ऑफ इमरजेंसी दिस इज द बेस्ट हेज. और जैसे मैंने कहा इंडियंस बाय नेचर दे प्रेफर गोल्ड. देन नेक्स्ट, दिस इज अ रिस्क टेकर इन्वेस्टर. अच्छा ये तो हो गया. द नेक्स्ट वन इज स्टॉक्स. Second person who has invested in stock. What he believed that this is engine of wealth creation. Stocks represent ownership in companies. Over the long term, equity markets have delivered the highest returns. इस सब फंड्स में, सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में देखें तो इक्विटी हैज गिवन हाईएस्ट रिटर्न. देखो इसकी ग्रोथ रेट 12.9% आ रही है. नो, इस टाइम थोड़ा सा गोल्ड ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन ओवर लॉन्ग टाइम ये यूजुअल टेंडेंसी रही है. हिस्टोरिक 12.9%. ये सेंसेक्स की वैल्यू है 81,330. इस टाइम आपको पता है 78,000 पे ये वेरी कर रहा है. 2016 टू मई 2026 हमने एनालाइज किया है. अब कहता है व्हाई आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. क्यों? हाई रिटर्न पोटेंशियल, मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट. दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ इकोनॉमिक्स कि अगर इफ यू हैव रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देन रिस्क पोटेंशियल, इसकी रिस्क, मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, हाई रिटर्न पोटेंशियल इज देयर. इक्विटीज हैव आउटपरफॉर्म अदर एसेट क्लासेस एंड इफ वी से सी हिस्ट्री देखें, हिस्टोरिकल चेक करें तो इसने, गोल्ड ने बाकी क्लासेस को, एसेट क्लासेस को बीट किया है. Beats inflation, of course, beat inflation. Leave aside last 2-3 years. In these last 2-3 years, Indian stock market especially has not performed well. There are many reasons, geopolitical reasons are there for which the stock market is not performing. But over the long term, this is an option which will beat inflation. Then ownership and growth, participate in growth and success story. I want to invest in Indian companies because I believe in India's story that it is going to grow. It is the fastest growing economy and in future this investment in this will give me very good returns. Liquid, and this is the most liquid asset. Within days you can convert. So this is compound annual growth rate 12.9% और historical returns भी हमने दिखाई है. मई 25 टू एक साल में 5.6%. आपको बताया मैंने कि पिछले कुछ साल से ये बहुत लो चल रहा है. पिछले एक साल से 5%, मैं कहूँगा 5% से भी कम इन सर्टन स्टॉक्स. देन 3 इयर्स में ये 14.8 सेंसेक्स, निफ्टी 5 इयर्स में 17.3 और 10 इयर्स को लूँ तो ये 14%, ये अराउंड 14 और सेंसेक्स 12.9%. ये सेंसेक्स की ग्रोथ दिखाई हुई. अब टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आपको पता, ब्लू चिप स्टॉक्स, दिस इज लार्ज एंड वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज. ग्रोथ स्टॉक्स विच आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अर्निंग्स फास्टर देन द मार्केट एवरेज, मार्केट से ज्यादा फास्ट भागते हैं. दिस इज ग्रोथ स्टॉक्स. वैल्यू स्टॉक्स, दैट स्टॉक्स which are trading in lower price at present but we know the company is very sound and in future it is going to grow. And then dividend stocks which are dividend paying stocks. So the second is I want to invest in stock. This is the ये हमने मई 2016 में 2026 ये अमेरिका के 3 इंडेक्स लिए, नैस्डैक, S&P, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और निफ्टी. So this is for person who have risk taking potential, but certainly this, because more risks are involved, economics का golden rule है, more the risk more the profit. But इसका reverse भी true है कि इसमें losses भी हो सकते हैं आपको if you have that loss bearing capacity. But in long term हम ये मान के चलते हैं, डिसीजन ये होता है कि इन्वेस्टर्स
जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में गेन करते हैं। नाउ कमिंग टू द रियल एस्टेट, देखो इसमें रियल एस्टेट मैं कहूंगा कि ये आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है कि हर एक आदमी चाहता है कि मेरा एक सुंदर सा घर हो, और डाउन द लाइन इंडियन मेंटालिटी की बात करूं तो डाउन द लाइन everyone wants to own a house. That is my mental level, mental satisfaction. But what about returns क्या है? कहता है why I want to invest in real estate. सबसे पहले why I want to invest in real estate. कहता है it's a tangible asset, real estate, physical asset that you can see and own. कि मैं सामने दिख रहा है मेरे को, मेरा ये फ्लैट है, ये मेरा घर है, मेरे को अच्छा लगता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है, जो मैंने अभी आपको कहा। वेल्थ क्रिएशन, प्रॉपर्टी वैल्यूज अप्रिशिएट ओवर टाइम। अब क्वेश्चन तो यही है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट करती है, बट डू दे बीट इन्फ्लेशन, कि रियल टर्म्स में क्या गेन होता है। देन रेंटल इनकम भी मिलती है हमें, ऑफ कोर्स अगर इफ आई गिव द प्रॉपर्टी, इफ क्वेश्चन इज इफ देयर इज आई एम सब टेनेंट इन्वाइट करता हूँ, टेनेंसी इन्वाइट करता हूँ, आई कैन अर्न रेंटल इनकम, देन दिस इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मोर और लेस बीट करेगी। देन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ये इस पे आते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे। टाइप्स ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल होम्स, अपार्टमेंट्स, विलास, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस, इंडस्ट्रियल, लैंड, प्लॉट्स ऑफ लैंड। और इसमें लेट मी रिमाइंड यू ऑफ ऑल दीज, इनमें भी रिटर्न, पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स आर डिफरेंट। रेजिडेंशियल में अलग है, कमर्शियल में अलग है, इंडस्ट्रियल में अलग है, लैंड में अलग है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल दे आर बाउंड टू गिव मोर रिटर्न्स देन दिस रेजिडेंशियल एंड लैंड, कि भाई घर नहीं तो जमीन तो ले ही लूं अगेन, लेकिन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव यू मोर रिटर्न कंपेयर टू रेजिडेंशियल एंड लैंड। अब हिस्टोरिकल रिटर्न्स, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें, एक साल में 7 to 9%, 3 साल में 8 to 10%, 5 years 9 to 11% और 10 साल में 10 से 12% रिटर्न है। नॉट बैड, 10 to 12%। लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी आती हैं, वो कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इट्स अ लेस लिक्विड एसेट, इतनी आसानी से बिकता नहीं है, and at the time of selling lot of paperwork, lot of documentation, taxation problems are there. So this is my third option, that is real estate। और yearly index growth आपको दिखाया, देखो index growth बीच के सालों में नेगेटिव रिटर्न्स भी हैं, of course these are covid years, that's why negative। उसके बाद फिर और एनुअलाइज जो है 3.58%, और कंपाउंड ओवर द 10 years जो हमारे पास है वो 6.5% है। तो तीनों में बोले गोल्ड में 12, स्टॉक्स में 14 और इसमें 6.5, एंड दीज डाटा आर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स। डू चेक दिस, डू वेरीफाई दिस डाटा। तो ये डाटा ये कहता है कि तीनों एसेट क्लास में इक्विटीज नंबर 1, नंबर 2 इज गोल्ड एंड नंबर 3 इज दिस रियल एस्टेट। बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट मेरा मेंटल सेटअप क्या कहता है? सो दिस इज गोल्ड वर्सेस स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट, ये मैंने अभी आपको बताया भी है, लेकिन फिर देखो यहाँ 14.3%, 12, ये 14.3% जो है, देखो ये इसमें ज्यादा इफेक्ट लास्ट 2 सालों का है, अदरवाइज ये रिटर्न इससे स्टॉक मार्केट से यूजुअली कम होती है। और आजकल स्टॉक मार्केट ने इट हैज अंडर परफॉर्म्ड, सो इट इज 12.9% एंड रियल एस्टेट 6.5%। सो इट्स वेरी क्लियर कि सबसे कम परफॉर्म 10 year परफॉर्मेंस में इसने किया। और करंट लेवल गोल्ड 4750 पर आउंस, नाउ इट इज अराउंड $4,000 पर आउंस। निफ्टी की ये वैल्यूज हैं, दिस इज फॉर इक्विटी मार्केट 23,500 के आसपास है। रियल एस्टेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंडेक्स 162 है। अगर 216 से अगर हम बेस मान के चलते हैं तो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। दिस इज फॉर रियल एस्टेट। देन 10 year कंपाउंड इकोनॉमिक, देन की ड्राइवर्स वो आपको बता ही दिया। गोल्ड के लिए इन्फ्लेशन, हेज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू,
global economic and geopolitical uncertainty में safe haven है, and moreover the central banks are buying these days. इसमें you want to be part of growth story of corporate sector. The corporate earning growths are their economic expansion, innovation, technology, and सबसे बड़ी बात liquid. Then इसमें urbanization and population growth, housing demand and infrastructure development, limited supply in prime location. Everybody wants to own the house own करना है, लेकिन if you are looking at return, this is the picture. Then illiquid, this is very high, gold is again very high, and stocks very high. इसमें low to moderate, लिक्विडिटी बेचते समय आपको प्रॉब्लम आएगी. लो टू मॉडरेट, एकदम हाथ रखते ही बिक नहीं जाता. स्टॉक्स हाथ रखते बिक जाता है, गोल्ड हाथ रखते बिक जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है. देन रिस्क प्रोफाइल गोल्ड में बहुत मॉडरेट है, इसमें आपको पता हाई है, और इसमें भी मॉडरेट है. तो अगेन व्हेन आई विल चूज कि वेयर टू इन्वेस्ट, इट विल डिपेंड ऑन माई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, व्हाट आई थिंक पर्सनली थिंक ऑफ फ्यूचर. सो इसमें हम आते हैं अभी आपको. देखो बॉटम लाइन क्या है कि रिस्क रिटर्न पैटर्न्स, रिटर्न्स डिफर ओवर टाइम बिकॉज ऑफ देयर यूनिक रिस्क रिटर्न पैटर्न्स. अब तीनों में गोल्ड विल ऑफर मी प्रोटेक्शन, स्टॉक्स विल ऑफर मी ग्रोथ, and real estate will offer me stability and mental satisfaction. The question is where I should invest. So answer is diversify. और क्या यूजुअली क्या कहते हैं कि 50% of your wealth in stock, real estate में 30% and gold में 20%. That's एंड रिजल्ट क्या कहते हैं कि आपको जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यू हैव टू डाइवर्सिफाई. Or diversification is this: some amount in stocks, some in gold, and some in house. You can't choose one कि मैं यही करूंगा, ऐसा नहीं है. No investment option is better than other. Every option has its plus points and every option has its negative points. Then what would I do? कहता है I will diversify across asset classes. जैसे मैंने बोला gold because it protect wealth, hedge against wealth, keep allocation steady. 20% मैं यहां इन्वेस्ट करूंगा. स्टॉक्स में हाईएस्ट रिटर्न पोटेंशियल, वेल्थ क्रिएशन ओवर लॉन्ग टाइम, स्टे इन्वेस्टेड. लेकिन इसके लिए गोल्डन रूल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए. स्टे इन्वेस्टेड 50% और 30% रियल प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड इनकम. मैंने कहा कि स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, एक घर चाहिए, एक छत चाहिए. सो फॉर दैट बेनिफिट्स फ्रॉम अर्बनाइजेशन. देन कहता डू फोकस ऑन क्वालिटी एंड लोकेशन, की क्वालिटी क्या है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस हाउस की, ताकि अगर आप डाउन द लाइन कहीं बेचना चाहो या शिफ्ट करना चाहो, एक क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. देन 30% फॉलो दीज प्रिंसिपल्स. आप ये रूल्स फॉलो करो. हैव क्लियर गोल्स, ये आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, मीडियम टर्म में चाहिए या लॉन्ग टर्म में चाहिए, पहले तो ये डिसाइड कर लो. एसेट एलोकेशन डिसिप्लिन, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, मैनेज रिस्क. डाइवर्सिफिकेशन विल रिड्यूस योर रिस्क. एक में नहीं बेनिफिट होता तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में. कंट्रोल व्हाट यू कैन, कीप लर्निंग एंड स्टे इन्फॉर्म्ड. माई एक्शन प्लान अगर मैंने करना है, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बिल्ड एन इमरजेंसी फंड कि 6 से 12 महीने तक कोई इमरजेंसी फैमिली में आती है, पहले तो इस फंड को अलग कर दूंगा. उसके बाद जो मेरे फर्स्ट फंड है उसको सिप्स में लगाऊंगा, सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करूंगा. देन आई विल मेंटेन माई टारगेट एसेट, उसमें चेंज नहीं करूंगा कि आई विल नॉट गोइंग टू पुट ऑल माई मनी इन स्टॉक्स, नॉट गोइंग टू पुट ऑल माई मनी इन गोल्ड और रियल एस्टेट. आई विल डाइवर्सिफाई and I will maintain my target of diversification. और periodically मैं अपना पोर्टफोलियो से 5 साल के बाद रिव्यू करूंगा, and if there is need I can change the portfolio. Then stay patient. सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए है कि you have to stay patient. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी लूज नहीं करता, ये हिस्ट्री कहती है. So you have to remain. Formula for success यही आ गया: डिसिप्लिन, diversification and patience. That will give you financial freedom.
देखो ये golden lines and gold protect, stocks grow, real estate provide stability and income. And best strategy is not about picking about the best asset. Best asset कि मैं ही हूँ बेस्ट हूँ, मैं ही बेस्ट चूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. But about holding the right mix. कि best asset नहीं, you have to hold the right mix if you want to grow. Then looking ahead to 2035, मैंने कहा 2035 में क्या होगा. Opportunity, risk and path of long-term wealth. 2000 focus on long-term, adapt to change, diversify, invest in future, create lasting effect. गोल्ड में इन्वेस्ट करो. आउटलुक फॉर 2025 2035 क्या है इसकी. इट विल कंटिन्यू रोल एज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन. ये अनसर्टेनिटी से आपको प्रोटेक्ट करेगा. सेंट्रल बैंक्स आर लाइकली टू हाइक देयर परचेजेस. आपको पता डी डॉलराइजेशन, the concept of de-dollarization coming. So this is expected to deliver stable long-term income. Then stocks driven by corporate earnings, engine of growth हैं. India's demographic dividend and reforms do support long-term investment in stocks. Global markets to benefit from technology. Technology down the line ये improve होती जा रही है और ये आने वाले टाइम में इक्विटी मार्केट में और करेगी. Build for future, real estate, अर्बनाइजेशन जो ज्यादा हो रहा है, इनकम, राइजिंग इनकम, इसके कारण हाउसिंग की डिमांड बढ़ती ही रहेगी. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सिटीज की डेवलपमेंट हो रही है. दैट विल अगेन बूस्ट द डिमांड फॉर रियल स्टेट एंड रेंटल हाउसिंग. एंड रेंटल हाउसिंग विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज. आने वाले टाइम में रेंटल इनकम के लिए भी इन्वेस्टमेंट इसमें की जाए, करते हैं, आगे भी करेंगे. देन outlook for 2040, this will give you stable income and long-term asset. This is having high growth potential and it's a wealth creator. Key trends जो 2035 तक हम देख रहे हैं वो क्या है. AI और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमीज होंगी, ग्रीन ट्रांजिशंस होगी, रिन्यूएबल एनर्जीज, डेमोग्राफिक्स, यंग इंडिया, ग्रोइंग मिडिल क्लास. इंडिया की बात करें तो पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये रिलैक्सेशन बढ़ेगी. और ग्लोबल शिफ्ट हो, डी ग्लोबलाइजेशन, सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट एंड जियोपॉलिटिकल चेंजेस. आपको बताया मैंने एक प्रेजेंटेशन पूरी डी डॉलराइजेशन की दी है कि आने वाले टाइम में ये चेंजेस तो होने वाले हैं. व्हाट टू एक्सपेक्ट बाय 2000 इंडिया. इंडिया में हम क्या एक्सपेक्ट करें, दिस इज जस्ट ए गेस. कि नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स होगा. पर कैपिटा इनकम $5,000 to 7,000. अर्बन पॉपुलेशन 600 to 650 मिलियन. हाउसिंग डिमांड 70 to 80 मिलियन. इक्विटी मार्केट 150% प्लस और इन्फ्लेशन 4 to 5% एवरेज. सो द पाथ टू वेल्थ अगेन, राइट नॉलेज, राइट एसेट मिक्स, डिसिप्लिन, टाइम, दैट विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम. So friends, final takeaway क्या है कि what we learned, gold is a timeless store of value and protection. Stock is engine of growth. Real estate provides stability, and the end conclusion is diversify. Spread risk across assets and geographics for better risk-adjusted returns. Balance है ये आपको बता ही दिया. 50 stocks, 30% real estate, 20. What मैं पर्सनली क्या करूंगा, हैव क्लियर गोल्स, एलोकेट वाइजली एंड रीबैलेंस रेगुलरली, मैनेज रिस्क एंड स्टे डाइवर्सिफाइड, स्टे इन्वेस्टेड एंड कीप लर्निंग. लर्न करता रहूंगा. और पाथ टू वेल्थ है, राइट नॉलेज होनी चाहिए, राइट एसेट मिक्स होना चाहिए, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, टाइम एंड कंपाउंडिंग, एंड you will definitely involve financial freedom. Friends, I come to the end of my presentation. Again, this is just a viewpoint. You have to consult your financial advisor. But I do hope एक common investor, एक commoner की language में मैं बोला हूँ. और commoner की language में अगर मैं investment एक middle class income group के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, वैसे तो सबके लिए ट्रू है, लेकिन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट वाइजली, डोंट पुट एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई. हर एसेट क्लास की अपने प्लस हैं, अपने माइनस हैं, सो थिंक वाइजली. सो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी. द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक is your knowledge and your future. So friends, that's all for today. I hope you will like this presentation.
And again, let me remind you that at Eco Tutorials, we have divided our presentations into three segments. Saturday, we will be giving weekly economic reviews. On Sundays, investment decisions, and during the weekdays, concept-based lectures, which may be for CBSC, which may be for general economics topic. And friends, again, this is a growing channel. Do subscribe and like my channel, share. जितनी सब्सक्रिप्शन जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना इसका पोटेंशियल हम और बढ़ाते जाएंगे, उसमें उतनी लेबर और बढ़ाते जाएंगे. सो थैंक यू, सी यू अगेन, and do subscribe my channel. Thank you.